politics over Ram Mandir continue. CPIM leader Mohammad Salim has politicized the grand Ram Mandir. Now, this time he said that the people have sentiments and religious beliefs, but the BJP, the central government and the RSS have tried to hide this. Why this hype? This is because they have failed to project the achievements of the central government. One more case of more words, one more case of politics being played over Ram Mandir. This is a big update coming for you right now, where CPIM leader has politicized, I repeat, has politicized and has asked that what is a big hype about Ram Mandir in the first place. So we have seen such comments being made earlier in the past as well, in the lead up to the Ram Mandir inauguration. But this time, once again, we are seeing that this comment coming in from CPIM. We already told you that Indie bloc leaders have stayed away from the Ram temple consecration ceremony, and they have made many statements in the past as well. They have slammed the center over Ram Mandir inauguration. So viewers, we're getting these details coming in right now, and as we keep getting more updates, let's go to Rakshita, who's also joining us at this point of time. Rakshita, I'm coming to you. And what we see at this point of time, Rakshita, is that the politics over Ram Mandir is not stopping anytime soon. Even after the Ram Mandir inauguration and the first day of Darshan, which is open for everybody from today, we're seeing politics and statements coming out, this time from CPIM. Absolutely, ever since the date has been announced, we have seen that day by day, back to back, it had become a habit of sorts from people, from leaders from the India Alliance to, of course, spew venom against a Ram temple. But, people here in Ayodhya, people have come from all across the country, Shivangi, and we've been speaking to them for the past 5 days, and they are undeterred. Right now, in my backdrop is the Ram temple. You can see that beautiful Bhavya Ram Mandir. Right now we are at the Ram Janmabhoomi Kshetra premises only. We are at the Mandir Parisar. From a vantage point of view, we are showing the beautifully decorated, just inaugurated Ram temple. And if I could, we could just zoom into that crowd. You can see it's being managed. It's being managed in batches. And to the left, if you can see, there are more people who are standing from this checkpoint. There are people who are waiting in batches, and they are being handled by the police very well. They are, of course, released after another batch from ahead. They complete their darshan and they exit, and they are, of course, waiting since early morning. Visuals have been coming in, so you can see whatever the politics may be, people are undeterred. Their astha, their faith, of course, continues to be not at all affected here. And we, of course, have been a witness. Our network reporters have been witness. We have been getting you the voices from the common man. Republic gets the voice of the common man. And as far as the politics is concerned, well, yes, CPIM had boycotted it. The first official boycott was from the CPIM, and what followed was a confusion from the Congress party. And then we know what RJD said, and there was such division from within the Congress party. When we can see that even people within the party had been breaking their ranks. They were in fact getting statements like, nobody can stop us. There are so many leaders who say that nobody can stop them. But we've seen there have been several of the opposition, be it the parliament. There was politics over the parliament. Why the Sengol, Rahul Gandhi commenting on Pradhan Mantri Narendra Modi's, Dandavat Pranam as well, saying that he is doing all this. So it hasn't been received very well. We've seen, especially in the Hindi belt, in those just concluded 3 states where Congress failed miserably. We've seen, despite all of that, nothing really impacted. And of course, we've seen, be it Article 370, there are so many decisions where the opposition has continuously, said something that has hurt the sentiments of the people, and they seem to have forgotten the lives that have been sacrificed. And this is something, behind me is a result of, a legal battle. It was a long-drawn legal battle, and communities over here, Shivangi, they are at peace. They have accepted the decision of the apex court. And this is a legal decision. This is something that is as per the law of the land. And here we are in Ayodhya, bringing you the latest, despite the politics that continuously is speaking. People, we asked them about, even the leaders who have come here to Hanuman Giri, to Ram Temple, they all, of course, have been dismissive about the politics. So that doesn't really matter, because Ayodhya is celebrating Diwali right now. And, the politics will continue. It is an election year. It is the general election year. And, of course, we do
do expect that this will not die down any soon, Shivangi. Right. Well, Rakshita, stay on because we are getting more right now. Ayodhya is in grip of religious fervor as long-awaited Pran Pratishtha ceremony of Ram Lala took place on Monday in the presence of Prime Minister Modi, RSS Chief Mohan Bhagwat and other dignitaries. Army helicopters showered flower petals on the temple premises when the consecration took place. Crafted by the skilled hands of sculptor Arun Yogi Raj from Mysuru, the 51-inch tall idol captured the image of a 5-year-old Lord Ram standing gracefully on a lotus, all carved from a single block of stone. The grand event saw the presence of around 7,000 VVIPs from across the nation, which includes actors, sportspersons, industrialists, politicians. People gathered to take a holy dip at Saryu Ghat in Ayodhya. Meanwhile, lakhs of devotees thronged to Ram Mandir as the Ram Mandir gates are now open to one and all. So we're getting those visuals coming in right now. Let's go, in fact, straight to Swesha, who's also joining us. Swesha, if you can hear me, you are on the river Saryu. And if you could take our viewers through the beautiful sights that you see all around you, Swesha. Yes, absolutely, Shivangi, and very good afternoon to all our viewers who are watching right now. We are at the Saryu Ghat, and in fact, inside the rivers of Saryu, with me is Maharaj Ravindranand Saraswati, and a very big abhishek is going to happen right here, where there will be important offerings that will be made to river Saryu. Maharaj जी, आपसे जानना चाहूँगी, अभी कुछ ही क्षणों में ये अभिषेक जो रिवर सरयू पे होने वाला है, इसके बारे में बताइए, क्या है? सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे देश को धन्यवाद। सरयू महारानी अवध में श्री राम लला जी प्रकट हुए हैं, विराजे हैं, संपूर्ण देश को सुख शांति और समृद्धि को प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भगवान का प्राकट्य और संपूर्ण ट्रस्ट के द्वारा जो भगवान को स्थापित किया गया है, संपूर्ण जो मुख्य अतिथियों के द्वारा संत जनगण्य सम्मान्य संतों के द्वारा वहाँ उपस्थित होकर सबको दर्शन दिया। और भगवान प्रकट होने का अर्थ ये है कि संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में शांति हो और सभी सुख शांति से, समृद्धि से संपन्न होकर जीवन यापन कर सके। तो किस तरह से ये अभिषेक किया जाएगा? अभी आप मुझे समझा रहे थे कि कुछ दूध, घी, पंचगव्य। ये जो है श्री गोदाम महातीर्थ पतमेड़ा विश्व का सबसे बड़ा गौशाला है, जहाँ पर 1.5 लाख से अधिक गौवंशों की, भारतीय वेद लक्षणा गौवंशों की वहाँ सेवा होती है। जब भगवान यहाँ विराज रहे हैं, भगवान प्रकट हुए हैं, यहाँ श्रवण करके जो संस्थापक, जो गौशाला के पतमेड़ा गोदाम के संस्थापक परम पूज्य गौर श्री दत्त शरणानंद जी महाराज जी को भगवान के प्रेरणा हुई कि वहाँ से 500 लीटर पंचगव्यों का भगवान के लिए अभिषेक के लिए भेजा जाए। और माँ सरयू महारानी महाराज भगवान के आह्लादिनी शक्ति हैं और उनके पूज्य है, जो अयोध्या सरयू महारानी के बिना अधूरा है। यहाँ जानते हुए पूज्य पतमेड़ा महाराज जी ने जो उस दिव्य प्रेरणा को मानते हुए सरयू महारानी को और भगवान को पंचगव्य से अभिषेक, और यहाँ संपूर्ण भारत के जो मुख्य गणमान्य संत विराजमान हैं, जो पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जो श्री वृंदावन से हैं, सो वराग घाट वाले महाराज जी पूज्य श्री जो दयानंद सरस्वती जी बद्रीनाथ से, जो धरणीधर आचार्य जी, और जो प्रमुख संत गोलक धाम वाले महाराज जी जो द्वारका वाले, आप सब यहाँ पूज्य पतमेड़ा महाराज जी के निवेदन से यहाँ पधारे हैं। कुछ ही क्षण में यहाँ जो वहाँ से लाया हुआ जो पंचगव्य और जो गो वेद लक्षण गौ से प्राप्त, अपने दर्शकों को जैसे वहाँ पर आप लोग ला रहे हैं, चलते चलते बात कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। आइए आइए आइए, ये दिखा सकते हैं? हाँ, ये दूध है। हाँ जी, हाँ जी। ये
यहाँ जो कैन में है जो 1100 लीटर जो वेद लक्षणा गौ से प्राप्त दूध जो दुग्ध है यहाँ लाया गया है, पतमेड़ा से ही आया है। यहाँ उनके दूध से यहाँ अभिषेक किया जाएगा। उसकी यहाँ प्रारंभ प्रक्रिया और सरयू महारानी के सहस्र नाम जो हमारे आचार्य विद्वान जो दयानंद शास्त्री जी महाराज जी के द्वारा, धनंजय जी महाराज जी के द्वारा यहाँ उच्चारण होगा। उनको विधिवत उनका आवाहन, उनका पूजन करते हुए उनको धारा प्रवाह में दुग्ध अभिषेक किया जाएगा। तो आप जैसे बता रहे थे कि कल मंदिर में भी अभिषेक किया गया था, आज सरयू नदी पर अभिषेक है, तो किस तरह से ये जुड़े हैं? ये जो है मुख्य उद्देश्य ये है कि सरयू महारानी जो भगवान के बिना वो आधा है और जो सरयू महारानी के बिना अवध अधूरा है। ये जो सरयू महारानी का दर्शन और स्नान से ही हमें परम गति मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इस कामना को लेकर के जो हम जो वेद लक्षणा गौ माता से आप देख रहे हैं, परम पूज्य श्री प्रातस्मरण गोलक धाम वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री मलकपीठ वाले महाराज जी, श्री वराग घाट वाले महाराज जी, दुग्ध से वेद लक्षणा पतमेड़ा से आए और दुग्ध से सहस्र नामावली के साथ माँ सरयू महारानी में दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत में भगवान के चरणों में यह प्रार्थना है कि जो संपूर्ण भारत में गो दुखी है, गो पीड़ित है, वेद लक्षणा गौ माता सुरक्षित हो, संरक्षित हो, इस कामना को लेकर के गो के यहाँ अभिषेक किया जा रहा है, धारा प्रवाह। तो ये हम जो आपको बीच बीच में जानकारी करते दिलाते रहेंगे। यहाँ जो विराजमान है संतों का आप दृश्य दिखाइए और अभिषेक का दृश्य दिखाइए। हमारे राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष है दिनेश गिरी जी, उनसे भी आपको वार्तालाप कराएंगे, जो सन्मुख कराएंगे। आप इस दृश्य को आप संपूर्ण देश को आपके चैनल के माध्यम के द्वारा, आप रिपब्लिक भारत के द्वारा आप उसको संपूर्ण देश को दिखाएंगे। इस शुभकामना के साथ आपको जो अवध से संपूर्ण भारत में जो वेद लक्षणा गोवंश है उनकी जो समृद्धि, उनके संवर्धन, उनकी हत्या को बंद कराने के लिए हम संपूर्ण भारत जनमानस से जो हिंदू सनातनियों से प्रार्थना करते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के माँ सरयू महारानी से हम प्रार्थना करने के लिए यहाँ ये कार्यक्रम को रखा गया है। अभी मंत्र उच्चारण होगा। पंचगव्य क्यों कहा जाता है? पंचगव्य है गौ से प्राप्त जो गोबर है, गौमूत्र है, दुग्ध है, दही है, इन चीज़ों को मिला करके घृत, ये सब मिला करके पंचगव्य कहा जाता है। पंचगव्य इतना महत्व है कि उसके बिना किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में व्यक्ति को उसको शुद्धि नहीं मानी जाती है। इसलिए पंचभूत के शरीर है, पंचघृत से ही उस पंचभूत शरीर को शुद्धि कराया जाता है। उसके उपरांत वो अधिकारी होता है कि भगवान के न्यास के द्वारा अपने शरीर में आवाहन करते हुए उस पूजा यज्ञ को संपन्न करा सके। उस शक्ति को प्रदान कराने के लिए गौ माता प्रमुख है। जी,